जी बिल्कुल जी। Assalamu alaikum, Sir Mohsin. Welcoming you to this webinar session. And firstly, I'm on behalf of Pakistan Stock Exchange. We are grateful कि आपने अपने कीमती वक्त से time निकाला to give us an insight on sustainability because there are many misconceptions और बहुत सी ऐसी चीजें और basically लोगों को पता ही नहीं है कि environment का कितना जरूरी वो है part in order to for any enterprise to prosper. और आजकल जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, मसाइल हैं, उसकी वजह से अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगी तो कौन सी कंपनी हो या कंट्री हो वो प्रॉस्पर नहीं कर सकती. तो इट हैज, कहते हैं वो उर्दू में कहते हैं कि सर एड़ी चोटी का साथ है दोनों का. सर इफ आई मे ऐड, आप सर यू आर फ्री टू स्टार्ट जब आप के लिए बेटर हो. जी, I think I can start. जी, Assalamu alaikum everyone and welcome Thank you, here sir. and thanks a lot to Pakistan Stock Exchange और आप जो भी इसमें साथ participate कर रहे हैं, definitely इसके ऊपर तो कोई बहस है ही नहीं that how inevitable and important this topic is and मैं भी अदना सी कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड जो भी थोड़ा सा मेरा अदना सा नॉलेज है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकूं और देख सकें कि जी इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं एंड देन वी स्टार्ट ऑफ जी फॉर्मली. सो इज इट विजिबल टू एवरीवन? फारूक साहब आपको आ रही है स्क्रीन नजर? जी सर. चलिए जी, थैंक यू जी. So let's move on जी. So I just wanted to start off क्योंकि ये sustainability के ऊपर आपने definitely आप सबने शायद मुझसे भी कहीं ज़्यादा पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा. तो मैं इसका एक बहुत छोटा सा element आपके साथ लेके चलना चाहता हूँ जिसको हम कह रहे हैं that how do you give voice to sustainability and what is that type of a mindset which is actually required to pull this type of a very important topic in your business entity, organization or a company you work with. So let's start off. मैं सबसे पहले before we move on to models and some of the things which we apply in our organization and in I have learned, I just wanted to share a reflective story with all of you. And that story goes by there are actually you on the screen you will see a picture जिसमें एक white haired female is carrying two pots and एक story है जिसका title है the starfish story. So I very quickly wanted all of us to reflect on I won't read both of them. मैं आपको थोड़ा सा explain करता हूँ. जो आपको right side पे image नजर आ रहा है. Now this story goes like this that it's an old woman जो कई मीलों का सफर अपने घर से पानी भरने के लिए करती थी और दो पॉट्स थे जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है और वक्त के साथ साथ वन ऑफ द पॉट गॉट क्रैक्ड एंड बिकॉज इसका कई अरसे का साथ था इस ओल्ड वुमेन के साथ तो वो बेचारा बड़ा अपने आप को बड़ा फील करता था कि अब तो मैं क्रैक हो गया हूँ. ये बेचारी पानी भरती है और घर तक पहुंचते पहुंचते वो पानी रास्ते में कहीं जाया हो जाता है एंड आई थिंक आई एम नॉट डूइंग अ गुड जॉब and I'm maybe a useless property for this old women right now. So वो क्योंकि पुराना साथ होता है तो वो इसको एक्सप्रेस एक दिन स्पीक अप कर ही लेता है और इस ओल्ड वुमन से कहता है कि जी why don't you just throw me out? I'm a cracked pot, no use to you and I think I'm not doing my job appropriately. That old woman replies to that pot that now when we are coming back from the water reservoir to our home सिर्फ तुमने करना ये है कि अपनी आंखें जरा खुली रखना और देखना तुम्हें क्या नजर आता है. ये यहाँ पे इसी तरह करता है. रास्ते में जब ये देखता चलता है तो इसको पूरे रास्ते में इसकी वाली साइड पे बहुत खूबसूरत पौधे फूल और वेजिटेबल्स नजर आते हैं. ये बड़ा हैरान होता है, देखता है कि अच्छा ये, और जाके जब इससे सवाल करता है तो पूछता है इससे कि हाँ मैंने देखा, इसलिए पूछती है उससे कि तुम्हें क्या नजर आया. तो वो ये कहता है कि जी मेरे पास मेरे सारे रास्ते में जहाँ जिस साइड पे मैं हूँ वहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल और वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीजें हैं. तो ये उसको तब सिर्फ एक जवाब देती है दैट नेवर थिंक अबाउट योरसेल्फ एज अ क्रैक पॉट. See you, everything is useful, it's just the mindset.
through which you actually take advantage of your skills and competencies. So I think with this short story I will take this journey forward. एक दूसरी story भी है, कोशिश ये करूंगा मैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो लोग भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें ये हम शेयर कर सकें पीपीटी, तो वो आप इसको पढ़ सकते हैं. बट द जर्नी एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द वे यू लुक एट थिंग्स. आप चलते जाएं, आपको रास्ते में कूड़ेदान भरे हुए नजर आए, वहां से बाहर कूड़ा गिरता हुआ नजर आए, तो ये आपके ऊपर है कि वो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है. आप यहाँ जा रहे हो, आपके पास जगह जगह पे गंदगी हो, जगह जगह पे आपको लोगों के साथ नाइंसाफी होती हुई नजर आ रही हो, आपकी वर्क प्लेस के ऊपर हैजर्ड्स हो और आप उसको पास बाय कर लें, ये भी चॉइस आपकी है. तो मेन जो बात इस स्टोरी से हमें पता चलती है वो ये है कि हमारी जो चीज ड्राइव करती है छोटे से छोटे एक्शन को या बड़े से बड़े एक्शन को, that's what actually which I am calling it as mindset. So let's move on. Let's go to the second. I think I have deliberately not talked about कि इसकी ये जरूरी क्यों है. जैसे फारूक साहब ने स्टार्ट किया था, I think we all are from that fraternity. We know that how important it is to take care of nature, how important it is to take care of our own natural resources, things we are being given by nature. उनको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या करना है, और हम जब उनका ख्याल नहीं रख रहे तो किस तरह के हैवॉक्स हमारे और आपके सामने आ रहे हैं. शायद ये चीज बड़े अरसे से चलती हुई जा रही है, बट एक्चुअली पेंडेमिक ने इसको और प्रोनाउंस कर दिया है. पेंडेमिक ने जहां बहुत सारी चीजें मुझे लगता है हमें रियलाइज करवाने में हेल्प किया है, वहां पे एक चीज बहुत ज्यादा रियलाइज हुई है कि जब हम बैलेंस किसी भी चीज का डिस्टॉर्ट करते हैं, वो आपके वर्क लाइफ का हो, वो आपके डिस्पोजल पे रिसोर्सेज का हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हो, तो हैवॉक जरूर क्रिएट होता है. पेंडेमिक के बाद वेलबींग के ऊपर टू प्ले मोर रिस्पॉन्सिबल एज इंडिविजुअल्स के बारे में सब बातें स्टार्ट हुई है. सो आई थिंक जहां पे ये डिस्गाइज था, आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग दैट इट एक्चुअली pushed human race to think more responsibly, to think about what is their contribution and actually all of this जिसको आप हम कई दफा environmental calamities, hazards, fires, sands, etc., sandstorms और बहुत सारी चीजों से जानते हैं. So to me, I think the biggest learning in all of this is that we have to now think beyond our individual lives. The mindset which we will be talking about, and we'll just have a look at it, that what it is and how do we actually implant and inculcate in our teams and work culture, is beyond an individual and it is collective. In order to actually handle that crisis which we all know in an absolutely excellent manner. So ये उसकी इस स्लाइड पे सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था आपसे, या शेयर करना चाह रहा था, जो शायद आप बहुत अच्छे से पहले भी जानते हैं, वो ये है that it is a shared responsibility, it is a collective responsibility. We should all collectively feel in it, not just one department, not just few people in the organization. It has to be a collective call by the company, only that then it will happen. Let's just move on to the next slide. मजे की बात यह है कि जब ये टॉपिक हमारे सामने आया था, या मेरी इंटरनल टीम इसके ऊपर कई दफा बड़ी बात करती है, तो सस्टेनेबिलिटी माइंडसेट के ऊपर रिसर्च भी हुई है दुनिया में. बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया है, लिखा है. बल्कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप लोग कभी इसको करना भी चाहें, तो देयर वाज एक्चुअली अ सस्टेनेबिलिटी माइंडसेट इंडिकेटर जो आपको आपके बारे में या आपकी टीम्स के बारे में, वो इस वक्त सस्टेनेबिलिटी के माइंडसेट को कितना रखते हैं नंबर. क्योंकि आपका ये भी कहा जाता है ना, जनरली जिस तरह की कंपनीज में, एंटरप्राइज कल्चर में हम है, दैट व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन. इट्स एक्चुअली इफ वी आर एबल टू measure something, quantify it, and then it's easier to work on it and then improve it accordingly. So ये जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने इसमें बहुत सारी बातें उस टूल के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर की हुई हैं, जिसका जिस्ट मैं सिर्फ टू स्टार्ट अपनी डिस्कशन के रखना चाहता हूँ कि, और मेरा भी इस पे बिलीफ है क्योंकि मैं इसको कई दफा ट्राई कर चुका हूँ, that whenever we talk about mindset, it actually is something which is bigger than actions. It is actually your second nature. जैसे कहते हैं ना, आपकी जीन्स बन जाए, आपका डीएनए बन जाए, तो ये वो एक्चुअली माइंडसेट इज दैट थिंग जो आपके
एक्शंस को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ड्राइव करता है। और इसमें सस्टेनेबिलिटी के लिए जो 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं या ये रिसर्च बताती है, वो ये है कि एक तो ये माइंडसेट सस्टेनेबिलिटी का तब बन सकता है इंडिविजुअल्स में या टीम में जब आप ग्रेटर गुड को सामने रखें, नॉट ऑफ योर इंडिविजुअल, नॉट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी, कंट्री एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। अगर हम नारा ये रखें ना, लेट्स मेक द वर्ल्ड a better place instead of let's make XYZ incorporated or XYZ company a better place, that's when the sustainability mindset journey starts. And why? इस थोड़ा सा इस पे मैं जरूर कहना चाहूंगा। इसका रीजन है बहुत अच्छा। ये सारी रिसर्च आपको बताती हैं, आप खुद जानते हैं सारे लोग, कि कंपनी जिस जगह पे एग्जिस्ट करती है उस सोसाइटी और कम्युनिटी के बगैर कुछ भी नहीं है। They cannot be separated. So it's inevitable for an organization to think inside. They have to think outside. They have to think about their stakeholders, the community they are in, and because they make up their employees, customers, and users. So that's what the greater good is, that we think beyond our organizations and नियति उसकी हम greater good की रखें। दूसरा पिलर जो सस्टेनेबिलिटी माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये एक्सप्लेन्स को करता है सिनर्जी, व्हिच इज अ वेरी हायर लेवल ऑफ टीम वर्क। हम सब आप जानते हैं, अक्सर हम इसके बारे में कंपनीज में बात भी करते हैं, बट दिस इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ टीम वर्क, व्हिच इज व्हेन you put your strengths together to achieve a greater good. That's when synergy occurs. And then the third pillar of sustainability mindset is continuity, and that's again absolutely important. अक्सर मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है, और आप सब इसको शायद तारीफ जरूर करेंगे, कि हम अक्सर कोई चीज एज अ फैक्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज वंस ऑफ। बहुत अच्छा आपने कोई एक चैरिटी का काम कर दिया, एक दफा आपने बहुत अच्छी तरीके से किसी एक डिपार्टमेंट को वंस ऑफ हैजर्ड फ्री कर दिया। आपने कभी एक दफा किसी एक कॉर्नर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के शायद हैजर्डस वेस्ट के लिए कोई इनिशिएटिव ले लिया। बट माइंडसेट ये तब बनता है जब आप इसको एक वंस ऑफ इनिशिएटिव से लेकर कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली रोल आउट करें। व्हेन यू आर डूइंग इट रेगुलरली, not as a fad or a fashion, once off, but regularly. So ये 3 चीजें हैं जो मेरे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी के माइंडसेट को डेवलप करने के लिए बेसिस हैं, which is again summary is that it's a mindset when you are thinking beyond individual and it's for a greater good, for the society and the world at large. When you pull off strengths from various corners of the organization, society, and community. And the third, you just don't do it once, rather make it as a system or a process which should continue even if you are not part of that system anymore. Let's move on. दूसरा इसी से रिलेटेड लिटरेचर में, एंड आई थिंक आई हैव आल्सो मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस्ड इट, इज दैट नाउ अब सवाल आता है कि पिलर्स तो इसके ये 3 हैं माइंडसेट के, बट आप इसको डेवलप किस तरह करें। तो एक व्यू उसमें से डेवलप करने का ये है कि अगर आप ये 4 काम कर लें इंडिविजुअल्स के अंदर, टीम्स के अंदर, तो इट्स almost guaranteed that you will be able to plant a sustainability mindset in a team, group, company, culture और society. और वो 4 काम हैं क्या? कि सबसे पहले तो you should actually feel or have that sense of urgency regarding the ecological worldview. लेट्स से एग्जाम्पल इसकी ये है कि अक्सर ऐसा होता है, जिसका इससे मैं इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ कि जी जब तक मैं ये समझता रहूंगा ना कि अच्छा जी एक प्रोविंस के अंदर एग्रीकल्चर को बर्न किया जाता है, तो मे बी स्मॉग इज ओनली एन इशू विच इज लाहौर एंड सराउंडिंग, I would not be able to actually contribute to its solution. That's one thing, that I need to think beyond myself, think it as a problem, thinking it as a problem that ये अगर आज यहाँ पे है तो हो सकता है कल पूरे 36 और 37 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये इशू प्रॉब्लम आ जाए और ये इतना बड़ा इवल बन चुका होगा कि इसको हैंडल कैसे करेंगे। तो that's what I am referring to as ecological worldview. इसका नुकसान क्या है माहौलियात के बुनियाद पे किसी एक चीज का, not to me or my factory or my company, but society, community, country and the world at large. The second thing which we can do is that if we can learn and train our employees or team members we work with to think in a systems perspective. इसकी एग्जांपल क्या है, कई दफा हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं
सॉल्व करने के बाद उसका कोई एक, कई दफा आपको पता है कि जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपके कोई लेट्स से 10 तरीकों में से 2 तरीके वर्कआउट करते हैं आपके लिए। सिस्टम्स पर्सपेक्टिव से मैं मुराद यहाँ पे ये ले रहा हूँ कि उसको रेगुलराइज कर दिया आपने, उसको फिर अब जहां जहां पे वो प्रॉब्लम नहीं भी हुई उसको उस सॉल्यूशन को अप्लाई करना शुरू कर दिया, ताकि आप रिएक्टिव से प्रोएक्टिव या प्रिवेंटिव वे ऑफ वर्क में चले जाएं। सो दैट्स द सेकंड habit. If we can put it out in our teams and people, you will definitely get a sustainability mindset, because that gives a permanent solution to all things. और जो दूसरे दोनों हैं उसको मैं थोड़ी देर के लिए कंबाइन करना चाहूंगा, क्योंकि इसकी स्लाइड, इस सेकंड स्लाइड पे इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट किया है, बट वो है आपकी इंटेलिजेंसेस एंड बोथ, व्हिच इज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मींस दैट आई हैव बीन, इसकी ये वाली सोच है कि अच्छा अगर मुझे कोई रिसोर्सेज दिए हैं तो मेरे पास फिर चॉइस है, या तो मैं इसे ज़िया कर दूं या उसका सही इस्तेमाल करूं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमें बार बार याद दिलाती है दैट व्हाई डिड यू एग्जिस्टेड, व्हाट इज योर रोल, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जब आप साथ कपल करते हैं और फीलिंग और एम्पैथी और इन चीजों को उसके साथ कपल करते हैं, तो आपके अंदर वो माइंडसेट पैदा होता है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं और आप उनके सॉल्यूशंस को सीरियसली क्राफ्ट आउट करने में कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल इसकी अगेन ये हो सकती है कि हम में से, आपका मुझे नहीं पता, बट आई हैव बीन विक्टिम ऑफ दिस टाइप ऑफ एन इवल सिंस अर्ली चाइल्डहुड। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे चैरिटी करने की बहुत हैबिट है, हम भी करते हैं, विच इज नॉट बैड, बट देन अगर हम एक बंदे को एक वक्त की चैरिटी करते हैं तो हम उसका बहुत शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन करते हैं, while I might be emotionally concerned with his well-being or her well-being, or maybe want to do some good for them. What I meant by combining both of them is that later on in life I learned that maybe just giving him some or her some money, can I do something which will make him more employable? वो क्या चीज होगी जो लार्जर बेनिफिट, ज्यादा देर पा, मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो दिस विल बी मोर टुवर्ड्स चेंजिंग योर डे टू डे रूटीन, रादर मेकिंग सस्टेनेबिलिटी योर डीएनए। सो दैट्स इन अ वेरी नटशेल। हालांकि इसने उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च किया, पेजेस से पेजेस भरे हुए हैं, बट ये है कि ये अगर हम 4 हैबिट्स अपने अंदर डालते हैं तो we are more prone to have a sustainability mindset. If I now move on, तो मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है, या जनरली जब मैं और मेरी टीम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम इससे किस तरह कर रहे होते हैं। सॉरी, When I say ecological worldview, ये जो हमारा ESG का फ्रेमवर्क है उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम इसे डिराइव करते हैं, जिसका मतलब ये है कि डेवलपिंग अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, नॉट टेकिंग इट एज अ कि जी जो हमारे यहाँ एटलीस्ट बहुत सारी जगहों पे ये हैबिट होती है कि अच्छा मुझे ISO 9000, 14000, SA 8000, इको टैक्स, इको लेबल, ब्ला ब्ला ब्ला, हजार सर्टिफिकेशंस हैं, वो अचीव करनी है, तो इसलिए शायद मुझे एनवायरनमेंट बेहतर करना है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि नहीं, अगर मैं इस वक्त एनवायरनमेंट बेहतर नहीं करता तो मेरे आने वाली नस्लों को शायद वेजिटेबल्स अच्छे नहीं मिलेंगे, शायद उनको स्मॉग से ज्यादा और बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स का सामना करना पड़ेगा, शायद उनके पास पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं होगा। So that's what I am talking about here, is that, so that's one pillar, that looking at our surroundings, nature, climate, etc., what is that I can contribute or my organization can contribute in this, and then take targets accordingly, not to actually raise our bar on certain certifications or a compliance, but actually looking at what is the spirit of environment, what are the real challenges my future generations will face, what do I need to do today to actually prevent that from happening later on. That's the first pillar, and that's in a very nutshell. अगर हमें ये करना आ जाता है, it's not that easy. It will require certain other things to go in the cultural DNA of a company, but you will at least do 1/3 of a sustainability mindset. The second is emotional and spiritual intelligence, and that's what is that. Then moving out from a single person, we start developing communities of practice.
लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करना। या मैंने अक्सर एक्सपीरियंस किया है कि जब हम एक अच्छा काम सिर्फ कंपनी के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर करते हैं तो ज्यादा फायदा नहीं होता, बट जब हम उसे थोड़ा सा एक्सटर्नल बाहर निकल के और लोगों के साथ बात करते हैं तो ये भी सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की ब्यूटी है, उसने इंसान को ऐसा बनाया है कि आपको लाइक माइंडेड लोग मिलने लगते हैं और वही काम आपका मुश्किल से आसान होने लगता है। मेरे ख्याल में मैं हेजिटेट नहीं करूंगा, वी हैव मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स इवन दिस कंपनी, जहां पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक छोटे से आइडिया से स्टार्ट करके इस वक्त बहुत बड़ी कंपनीज हैं और बहुत ग्रेटर गुड के लिए काम कर रही हैं, जिनमें फाइनेंशियल वेलबींग से लेकर ह्यूमन वेलबींग के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही होती हैं। फर्क वहां पे भी यही होता है कि वो इसकी कोई न्यूज की हेडलाइन बहुत ज्यादा 1000 एंड 2 lakhs लाइक्स लेने के लिए नहीं कर रहे होते। बेसिकली उन्हें लगता है कि उनका ये एक कदम कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़े इफेक्ट लेके आएगा और उनकी फ्यूचर जनरेशन और वो जो वो बैक करते हैं इस प्लेनेट को, इस सोसाइटी को, उसमें रोल प्ले करेगा। सो दैट्स व्हाट इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट। एंड द थर्ड, जैसे इसमें आपके सामने लिखा हुआ है, ये वो है कि हम हर चीज जो भी कोई एक्शन करते हैं उसको रेप्लिकेबल बनाएं। छोटे एक्शंस को मैसिव स्केल सोचें इस तरह की, हम इसका सिस्टम कैसे बना सकते हैं ताकि बाय डिफॉल्ट लोग ऐसे ही करने लगें। इसकी मिसाल इस तरह के कुछ कल्चर्स में है कि आप जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं और अगर आपका फॉरेन रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा होता है कि एक हाथ बेल्ट की तरफ जाता है और वो लगाता है, सो दैट्स व्हाट सिस्टम पर्सपेक्टिव, उनको इतनी आदत पड़ गई होती है कि उनका डीएनए इस तरफ चलने लगता है कि अब वो उनका सेफ बिहेवियर इज देयर माइंडसेट बाय द वे। और वो बहुत सारे एक्शंस, यानी उनकी बेल्ट का इजी कन्वीनियंट पे होना, दैट्स वन पार्ट ऑफ द सिस्टम। कई जगहों पे आपकी गाड़ी के अंदर बीप का बजना कि वो आपको अब याद दिला रही है कि आपने बेल्ट नहीं पहनी। सो दिस इज व्हाट इज डूइंग। एंड आप और हम इस तरह के बहुत छोटे छोटे एक्शंस अपने शॉप फ्लोर के ऊपर, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल कुड बी कि अगर मुझे लगता है कि जो मैं लाइटें जलाता हूँ ये बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करती हैं और इंसान ने सोचा है इसी वजह से कि अब उन्होंने वो ऐसी लेड लाइट्स ले आए हैं कि जो जब तक मोशन को सेंस करके जलती हैं, तो मे बी आई नीड दोज टाइप ऑफ लाइटिंग इफ आई एक्चुअली आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एंड दैट्स अगेन वन एग्जांपल। हमारे पास ऐसे टैप आ गए हैं जहां पे जो खुद से आप ह्यूमन को सेंस करके या ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, या इस तरह के टैप के डिजाइन आ गए हुए हैं कि जब अगर आप उनको नीचे अपने पाउंड से प्रेस और वो कर सकते हैं ताकि आप पानी की वेस्टेज को आधा कर सकें। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल थी जो मेरे हिसाब से किसी भी चीज को जब आप रूट कॉज को किल करते हैं और उसको रेप्लिकेबल बनाते हैं, तो दैट्स व्हाट आई मेंट बाय सिस्टम पर्सपेक्टिव। I think that, so in summary, so these are, if you apply these three pillars and do them in this spirit, definitely we are on a journey towards a sustainable mindset. Let's move on जी। इसके बाद एक स्लाइड जो अब आपके मैंने सामने रखी है, एक ये मॉडल है जो अडेप्ट किया है हमने 2012 में। एडवर्ड हैं, इन्होंने बनाया था। एक एथिक्स के ऊपर एक फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, गिविंग वॉइस टू योर वैल्यूज। इसी से डिराइव किया हुआ इनका मॉडल है। और ये मॉडल ये कहता है हमें कि अगर आपने सस्टेनेबिलिटी का माइंडसेट किसी भी जगह पे इनकलकेट करना है तो सबसे पहले आपका इश्यूज की आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अगर कंपनी लेवल पे इसको लें तो इससे मुराद इनकी ये है कि जी हमें ये पता हो कि जी हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिगर चैलेंजेस वाटर कंजर्वेशन के हैं, उनका वेट प्रोसेस है, बट किसी का ड्राई प्रोसेस है, तो वाटर कंजर्वेशन इज नॉट अ चैलेंज फॉर देम, बट मे बी एनर्जी कंजर्वेशन इज। और किसी और ऑर्गेनाइजेशन का मे बी शायद ये दोनों ना हो, बल्कि उनके एम्प्लॉइज की वेलबींग इज अ बिगर चैलेंज। सो वट एवर इट इज, keep that very very clear. Once you have clarity that what are those 2 3 4 5 6 bigger things you want to work on, you have started the journey with a sustainable mindset. The second is that आप वो जैसे कहते हैं ना कि आप why बिल्कुल क्लियर करेंगे, अच्छा ये challenges हैं, इन्हें सॉल्व करना क्यों जरूरी है, what will happen if I don't act on them now, what are the issues, what are the challenges, जो why करते हुए आप जाएंगे तो you will be able to articulate why it is very very important to handle them now. एंड वो दैट्स द सेकंड स्टेप, दैट आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये चैलेंजेस जो हैं इनको हैंडल करना क्यों जरूरी है। और वो फिर लिंक होते हैं, अच्छा अब इनको करने के लिए किन किन लोगों की सिनर्जी मुझे चाहिए होगी,
कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं? आर दे गवर्नमेंट बॉडीज? आर दे ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जांपल? आर दे एम्प्लॉय बॉडीज, वर्कर काउंसिल? आर दे एनी रेगुलेटरी बॉडीज? आर दे investors? Are they my customers or are they my employees? So you will be, when you are very clear on what is an issue, why do I want to manage it, and what is exactly in the end I'm looking for, you will be able to identify all the parties who will be able to help you to work on it, and you will be able to derive synergy. चौथा उसके बाद है सॉल्यूशन. अब आप जब को आपके पास एक, जो अगर मैं खुद सोच रहा होता और स्टेक इतने सारे मल्टीपल लोगों की व्यू को ना लेता अकाउंट फॉर, तो मे बी आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन. मे बी इट्स अ वेरी शॉर्ट साइटेड सॉल्यूशन जो मेरे अकेले के दिमाग ने सोचा है. और हमें सबको पता है कि एक से भले दो, जिस तरह कहा जाता है ना, पुराने कहावतें भी हैं कि दो और दो चार नहीं होते, पांच होते हैं. So it's that when too many people, or maybe the right number of people, sit together and use their brain, you're actually able to come up with multifaceted solutions which are required for sustainability. You have to apply multiple lenses. एक लेंस एम्प्लॉइज का है, एक कस्टमर्स का है, एक रेगुलेटर का है, एक सोसाइटी का भी है, एक इन्वेस्टर का है, एक आपकी फ्यूचर जनरेशन का है. So when you put together all of them and look at all these lenses, high probability is that you will actually take better decisions and better solutions. And then the last one is that ये इस मॉडल के हिसाब से ये कि जब आप किसी भी चेंज मैनेजमेंट की जर्नी में चलते हैं, generally it is very very difficult, and two things which are very important in this journey are, one is, इसको जिसने इसको स्क्रिप्टिंग कहा है, मैं उसको कम्युनिकेशन कहूंगा. रेगुलर कम्युनिकेशन, द राइट अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन, द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन. क्या चीज जिन लोगों के थ्रू आपने ये सब कुछ बदलना है, सस्टेनेबिलिटी को माइंडसेट बनाना है, सस्टेनेबिलिटी को डीएनए बनाना है, उनको क्या चीज सही कम्युनिकेशन का टूल है, उनको जुबान कौन सी समझ में आती है, उनको स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, उन लोगों को एग्जाम्पल्स कौन सी देनी है, उन लोगों के साथ बात कैसे करनी है, तभी आप उन्हें मोबिलाइज कर सकेंगे और ये आपके डीएनए में आएगा. और जहां पे वो कभी डिमोटिवेटेड हो, उनको लगे कि जी नहीं तो माशरा ही हमारा बड़ा खराब है, यहाँ तो कुछ नहीं बदला जा सका, तो आपने कोचिंग किस लेवल पे करनी है, कहाँ पे आपने उन्हें मेंटर करना है, कहाँ पे कोच करना है, दैट्स आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. एंड देन दिस पर्सन हैज गॉन टू मल्टीपल एग्जांपल्स थ्रू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनमें ये मॉडल, और मैंने भी इसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में छोटे लेवल पे अप्लाई किया हुआ है कि जब आप ये सब स्टेप्स कॉन्शियसली अप्लाई करते हैं तो आपका वो सॉल्यूशन, वो एक्टिविटीज a lot long term, more rewarding and replicable, which is actually the intent of, in my view, all these sustainability initiatives. Now just moving on, तो ये मॉडल बेसिकली ये था. आपको इसके बाद हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम जो मेरा नॉलेज है मैं उस पर शेयर करूंगा. इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए मैं सिर्फ एक एसेंस ऑफ टाइम सामने रखते हुए एग्जांपल डालना चाह रहा था. लुकिंग एट दिस सैफायर की अगर मैं एग्जांपल लूं, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं इस वक्त, we decided these 4 principles for our sustainability journey. And these principles आपके जैसे स्क्रीन में आपके सामने. फर्स्ट प्रिंसिपल इज सिनर्जी. इट इज नॉट अ सस्टेनेबिलिटी फंक्शन जरूर है, हर कंपनी में होता है, हमारे पास भी है, हमारी फैक्ट्री में कंप्लायंस का और सस्टेनेबिलिटी का फंक्शंस भी है. बट देन the change we wanted to bring is that its sustainability is never going to happen if it's only their job. It's the job of each and every individual who work in my company, and we need more collaboration inside as well as outside. कई ऐसे काम है जिनका मैं एक्सपर्ट ही नहीं हूँ. सैफायर टेक्सटाइल एक्सपर्ट नहीं है, बट दुनिया में लोग हैं जो उसके एक्सपर्ट हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन फुटप्रिंट को मेजर कैसे करते हैं. अच्छा, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हमारी अपनी इसमें टेक्सटाइल में बहुत सारी कंपनीज है जो हमसे बहुत अच्छा काम कर रही है. So we can learn, share best practices and learn from them. That's what is our first principle. Then is that we have been working and are almost there to have a measurable framework on what to measure. उससे हमें पता ये चलता है कि कहाँ पे हालात बहुत खराब हैं, वहां पे हमें एक्शन पहले लेना चाहिए, और कहाँ पे किन चीजों पे हम थोड़ा सा और थॉट प्रोसेस लगा के, टाइम है हमारे पास, डैमेज इतनी ज्यादा नहीं है, जिनको ठीक करना चाहिए. So that's what I'm calling it as a proactive approach. Then the third is, the most vital thing is data. In this journey, everything and anything has to be recorded and then referred and then
deciphered to take different meanings. That's absolutely important. And we have devised a framework out of it, which we will be using for future data analytics, etc. And the last but not the least, absolutely important pillar of our sustainability principle is empathy. जैसे मैंने पहले बात की थी, this is linked with greater good. I need to feel the pain, even if it's not happening in my organization. But it is something which is damaging community, society. As an organization, if I have a sustainability mindset, this is what I need. I need to be empathetic about it. Have a absolutely good listening ear as I have a talking tongue. So ये वो वाली बात है कि वो हमने उनको डिसाइड किया है. हमारी जर्नी लॉन्ग है, काफी कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ करना है. ये सिर्फ मैंने आपके एग्जांपल के लिए लिया था दैट बिल्डिंग अप फ्रॉम दोस 3 pillars, this is what is the foundation of our sustainability journey. And if I move on, second last slide rather, जो मैंने बात की थी, ये मैंने सिर्फ उन सारे टूल्स में से एक को आपके सामने इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये जिस तरह का टॉपिक है, जिस टाइप की चेंज मैनेजमेंट है, इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. इट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. आप किस तरीके से लोगों को इसमें मोबिलाइज कर सकते हैं, टीम्स को, इंडिविजुअल्स को, टॉप मैनेजमेंट को और दूसरे सारे स्टेक होल्डर्स को. दैट्स द आर्ट. आपके सामने इस पे सिर्फ 3 टाइप की एग्जांपल्स हैं. एक बिल्कुल नॉर्मल सा, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे जो है 10 टिप्स फॉर रिड्यूसिंग योर कार्बन फुटप्रिंट, वो भी एक मैसेज दे रहा है. एक बिल्कुल लेफ्ट पे है हाउ टू लिव विद लेस प्लास्टिक, और एक बिल्कुल मिडल में एक इंफोग्राफिक चार्ट है दैट वी नीड आवर ओशन एंड आवर ओशन नीड अस, हाउ टू हेल्प. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू हियर इज दैट देयर आर मल्टीपल अप्रोच टू डू कम्युनिकेशन. मैजिक वहां पे होगा जब आप ढूंढेंगे कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्टेक होल्डर्स के साथ कौन सी चीज मोस्ट इफेक्टिव है. कभी वो शायद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, कभी वो एक वीडियो मैसेज होगा, कभी वो डिजिटल वीडियो कंटेंट होगा, और कभी इस तरह के स्केच नोट्स या इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में कोई ना कोई मैसेज होगा. बट कम्युनिकेशन, दैट्स वन ऑफ द की पिलर which will actually make you more sustainable. आपकी ड्राइव को हेल्प करने के लिए उस माइंडसेट को भी, जो इसका आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट या डीजल है ना, वो है the way you communicate that mindset and those things to your organization. So इसके बाद मैंने एक आपके साथ एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाह रहा हूं. when we were studying and looking at it, so I found a very good model on these similar things जो आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले तक शेयर कर रहा था. ये मॉडल एक्सेंचर का है, मेरा नहीं है. एक्सेंचर इसको यूज करता है टू एक्चुअली बिल्ड देयर सस्टेनेबिलिटी डीएनए. एंड अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर किस हद तक उन्होंने जो अभी तक बातें आपके साथ अभी तक मैंने शेयर की हैं, या जो बहुत सारी चीजें हैं, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल. इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन डिग्निटी, इट्स टॉक अबाउट empathy, it also talks about dialogue, it also talks about resilience, it talks about purpose, the why, ethics. And then it, so this is, so in a nutshell, and this is derived from sustainability principles, mindsets. This organization made their sustainability DNA. Sorry. And they talk about this, and they this back to their organization and then design their activities accordingly. I think कि हमें भी जिस तरह हमने अपने 4 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, इस टाइप की कोई भी चीज स्पेल आउट करना मुझे लगता है कि बहुत फायदा देता है और हेल्प करता है कंपनी को. सॉरी, I have a bad asthma today, तो थोड़ा सा वॉइस खराब हो गई है आगे लेके चलने के लिए. So I think this is what I have, and this is all what I wanted to share. I think that I can stop, and फारूक साहब अगर आप मुझे बताएं, गाइड करें आगे, कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोई और चीज है तो हम. Sir, first, thank you, sir, for giving insight regarding the concept of sustainability. एक सवाल already एक है. सवाल ये है कि
जिनको भी कोई सवाल करना है काइंडली Q&A में आप टेक्स्ट बॉक्स में यू कैन राइट। एक सर सवाल आया कि फैशन इंडस्ट्री इज प्रोड्यूसिंग माउंटेन्स ऑफ क्लोथिंग गार्बेज, आर वी रियली रेडी टू स्लो इट डाउन अ बिट? So I think that's an excellent question. I think I'm not sure that जो we may somehow or whenever someone says we, मेरी हैबिट है क्योंकि मैं DNA में रच बस गया हूँ, मैं इसको अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो जब मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा, मुझे नहीं पता मैं अभी इसके ऊपर पूरा रेडी हूँ कि नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी organization has started thinking about it. I think we have already Sapphire Retail as a initiative where they are incentivizing their customers to bring back their old cloths, submit it at the stores, and what we do with them is that कि हमने उसमें से उनको sort out करके जो बहुत अच्छी हालत में उनको चैरिटी किया है, और जो अच्छी हालत में नहीं है उनको हमने अपना पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिसमें हम फैब्रिक को त्रैश करते हैं और उससे दोबारा फाइबर जनरेट करते हैं, विच इज पार्ट ऑफ आवर सर्कुलैरिटी एंड लॉन्जेविटी ड्राइव्स। उस फाइबर से हम दोबारा धागा बनाते हैं और उस धागे से दोबारा कपड़ा बनाते हैं, which is, I think, I won't say that but it is a step in the right direction. It is a drop of fresh air in the vision forward for our, and our organization is doing a lot of this these days. मेरे ख्याल में वेस्टर्न वर्ल्ड ऑलरेडी इस तरह की चीजों पे बहुत काम कर रही है। सॉरी सर, तो ये है, आई थिंक ये आपको आइडिया दे देगा, बट अब पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज इस तरफ जा रही हैं। Sapphire and Sapphire Retail is one example out of it. जी सर, ये अगला सवाल है सर कि is there any guideline on sustainability reporting in Pakistan currently, even if it's not mandatory? आई थिंक बिकॉज हमारे पास, अगर आप मुझसे ऑफिशियली पूछेंगे तो गाइडलाइंस दुनिया में बहुत एग्जिस्ट करती हैं, और रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इस पे काफी काम किया है। तो कैन आई रिक्वेस्ट फारूक साहब टू ऐड टू दिस? सर, टू ऐड टू दैट सर, हमारी जो चेयरपर्सन है उनके उसमें हमने एक ESG टास्क फोर्स बनाई है with taking feedback from various aspects of the industry. We are trying to channel out कि हम एक framework बना सकें जिस पे reporting framework हो, जिस पे हम काम कर सकें list for पहले listed companies के लिए, because ESG index is being followed internationally. So we are trying to build a framework here ताकि उसी राह पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, along with Pakistan Institute of Corporate Governance, कि उनके साथ मिलके हम एक फ्रेमवर्क बना सकें जिसपे एक ब्लूप्रिंट हो, जिसपे लिस्टेड कंपनीज को हम एक गाइडेंस दे सकें। उसी का एक वो है प्रिकर्सर है कि हमने ये फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत ESG की कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी की अवेयरनेस के लिए ये सेशन शुरू किए हैं। जी बिल्कुल, उसके अलावा मॉडल्स बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट क्योंकि मैंडेटेड नहीं है तो, लेकिन बहुत सारे लोग यूज करते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ कंपनीज जिनका ESG रिपोर्टिंग का पूरा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। जी सर। सर एक क्वेश्चन ये आया कि सर इन्होंने रिक्वेस्ट की है सर प्लीज 4 प्रिंसिपल्स रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इनकी बात कर रहे हैं, ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं। आई सर बिकॉज जो साहब है उन्होंने कहा कि 4, जी उन्होंने यही कहा कि 4 प्रिंसिपल्स रिपीट कर दें। जी सर, ही हैज जस्ट रिप्लाइड यस। सॉरी, 4 प्रिंसिपल्स ये आपके सामने हैं, तो इसमें जो है इसको मैं दोबारा बहुत क्विकली बता देता हूं। पहला है आपका, सॉरी, ecological worldview, which is that having your climate view about what is climate, how does it help society, what is the role of climate monitoring, evaluation, etc. for an organization. So having a very focused view on this, that's what we meant. Then
इसको जिस तरह कहते हैं ना सेंस ऑफ अर्जेंसी की, ये है क्या ऐसा, अगर हम इसको मैनेज नहीं करते आपके सामने सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कि हमारा इसके ऊपर क्या प्रायोरिटी है। नेट जीरो इनिशिएटिव एग्जिस्ट करता है, आपके सामने है कि हम क्लाइमेट को मॉनिटर नहीं करते तो हमारे सीजन्स में या वेदर में कितनी ज्यादा चेंजेस आ रही हैं, स्मॉग के कहीं पे इश्यूज हैं एक्सेट्रा। द सेकंड इज सिस्टम पर्सपेक्टिव, ये है कि आप किसी भी चीज को एक दफा सॉल्व करने की बजाय अगर आपने किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है तो उसको रिपीटेबल बना दें। दैट्स दिस प्रिंसिपल, that always find solutions which are replicable beyond your organization, beyond short term. Third is emotional, किसी भी चीज को जब आप beyond logic लेके जाते हैं, which is what is the impact on humans, how is it impacting my future generation। तो जिसको आप कहते हैं ना, हम आप इस तरह की दुनिया में रहते हैं जहां बहुत सारा डिजिटल कंटेंट है, वहां पे एड्स भी इमोशनल अपील वाली ज्यादा चलती हैं। डालडा जहां मामता वहां डालडा, फॉर एग्जाम्पल। So this is that type of a thing, that find out what are some of the challenges which when presented to individuals can tingle their emotions, they feel the pain। And the last one is sorry ji, I don't do it for certification, compliance, or once off. I do it for the larger good. And again, going back, why did I existed? What is my reason of birth? For example, why this life exists? If this life exists, do I need to take better management, और मैं इसको इसी तरह जैसे चल रहा है छोड़ दूं? That's what spiritual intelligence is. I think ये मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। किसी का हैंड रेज हुआ हुआ नजर आ रहा है जी। सर क्या कहते हैं सर, एक क्वेश्चन टेक्स्ट बॉक्स में है कि often times sustainability initiatives are made a part of CSR umbrella. Is it justified to take them up together? आई थिंक ट्रेडिशनल ये कॉन्सेप्ट रहा है, मेरे हिसाब से अगर आप मेरा जवाब पूछेंगे, नो, बिकॉज CSR इज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, वाइडर सस्टेनेबिलिटी, बट they can be CSR initiatives are part of a wider sustainability umbrella, but sustainability is much bigger than CSR. तो साथ आप लेके चल सकते हैं, लेकिन ये sustainability is much bigger, that's what I want to say. जी अच्छा सर। And I would ask the audience, any more questions? I think we are done with it. It seems. Thank you very much, sir. It is an honor कि आपने क्या कहते हैं, आप मेरे ख्याल से एक सवाल भी अभी आया है जी। Decide to make a legislation. Sir, आपको नजर आ रहा है कि if government decide to make a legislation about ecocide, mass destruction of environment by industrialization, a law as a crime against ecosystem, the industrialists of Pakistan, will they be okay with it? So these type of questions फारूक साहब आप भी इसमें दे देंगे, मैं बहुत क्विकली अपना व्यू दे देता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से ये किसी के बारे पे, किसी के बिहाफ पे कमेंट करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट आई पर्सनली फील दैट industrialists in Pakistan are also now more aware than they used to be 10 years ago. They think that this is the need of the time. They want to be more environmental friendly. They want to be more individuals with more focus on employee well-being, customer well-being, society at large, etc. So चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। मुझे लगता है कि अच्छी चीज के लिए सब काम जरूर करेंगे क्योंकि इसमें उनका भी फायदा है। फारूक साहब, ओवर टू यू। जी सर, सेकेंडिंग योर पॉइंट, अब वैसे भी सर अगर आप आवाज ही चली गई। एक्सपोर्टेड इंडस्ट्रीज में देखिए कितना फॉलो कर रही हैं।
आपकी बकायदा ऑडिट में भी आता है। तो इट्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको एक प्रायोरिटी देता है। विद टाइम हम जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए इट्स टेकिंग इट्स टाइम, बट जैसे जैसे लर्निंग कर्व बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली वो चीज भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज हम अपने लिए देखें कि वी आर एग्रीकल्चर कंट्री, तो हमारे लिए इकोलॉजिकल कंसर्न को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, आई एग्री। बट आई थिंक क्वेश्चन तक और कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज एन ऑनर, क्या कहते हैं, एंड आई एम श्योर इक्वली अ जो लोग प्लेजर जी, थैंक यू। जो ना सिर्फ ये जो इस सेशन का हिस्सा रहे उनको भी फायदा हुआ होगा इन लर्निंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और सारे पार्टिसिपेंट्स का। थैंक्स थैंक यू फॉर सर। लिसनिंग। खुदा हाफिज सर। हाफिज जी। बिल्कुल एंड पे आके तो मेरी वॉइस जो है ना है, बिल्कुल आपका गला जो है वो आपको शायद